Hello everyone, hi Ashutosh is here and now today we are going to discuss about the Avenue supermarket which is also known as Dmart, its valuation and everything that goes. तो राइट नाउ डिमार्ट जो कि ट्रेड हो रहा है 4000 3960 से 4000 की लेवल पे, जिसका 52 वीक हाई था 5900, जिसका 52 वीक लो था 2800 एंड जो कि ट्रेड हो रहा है 177 के पीई पे। एंड आई थिंक कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टॉक है। तो टॉकिंग अबाउट द पीई रेशियो, ओके, उससे पहले भी मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो डीमार्ट को 5 साल से ज़्यादा के होराइजन पे होल्ड करना चाहते हैं। अदरवाइज ये जो डिस्कशन होगा वो आप उतना सीरियसली ना ले और इसे बस एक डिस्कशन की तरह ले। तो राइट नाउ द डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्केट विच इज ट्रेडिंग एट अ पीई ऑफ 177. This is a high PE and expensive stock in my opinion and probably every other who thinks conventionally. लेकिन PE में दो टाइप के लोग होते हैं. There are the one people who say कि high PE means the stock is expensive, which is what we study in our this is what we have studied in our curriculum also. And there are some other type of people who will say that if market has given it a respect, market ने उसे respect दिया है, अगर people are willing to buy at 170, so who are we to question? So this is a new philosophy of high PE, justifying high PE, and it is not a completely vague or false because even in the past the Asian Paints, Pidilite, Nestle, HUL, all these stocks were trading at a high PE of 70, 80s. Still उन्होंने रिटर्न दिए है, जस्टिफाई किया है, still they are the market leaders. So you cannot just write it off this second philosophy that the particular stock is trading at high PE, so it's an expensive one. इसे हम दूसरे से देखेंगे. The fact about this Asian Paint, Nestle, HUL, Pidilite was कि despite having a high PE, they have enough free cash flow. That's why they kept on paying dividend. And in the market, what analysts did is like if the company is paying dividend, it's having a good free cash flow, they don't care about like if even if the earnings are subdued for 1 or 2 seasons, they don't care. The stocks don't fall that much. And same is the thing with the Dmart. It is having a huge cash flow which has grown 10x in the 10 years. So that's why analysts may give Dmart a 10 earnings season, probably 2.5 years, even if they give subdued result. Analysts don't care that much. Even if the stock has corrected almost 30% from 6,000 to 3,000, almost like 50% we should say. Oh no, it's on 4,000, so 35 percentage. So अब डीमार्ट को 177 के पी को अगर जस्टिफाई करना है, इफ डीमार्ट को ये स्टोरी को इंटैक्ट रखना है, तो डीमार्ट के सेल्स को पता कितना बढ़ना पड़ेगा. बाय 2050 डीमार्ट का सेल्स शुड क्लॉक एट 75 लाख करोड़. राइट नाउ डीमार्ट सेल इज 40,000 करोड़. डीमार्ट को यहाँ से इतना बढ़ना है. उसके अलावा डीमार्ट का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहना चाहिए दैट शुड बी 5.3 लाख करोड़ एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 4 लाख करोड़ बाय 2050 टू जस्टिफाई इट्स करंट वैल्यूएशन. यू मे थिंक ओके हो जाएगा, स्टोरी है, ग्रोथ है, ग्रो कर रही है, बट नो, दिस इज नॉट. 75 लाख करोड़ कितना बड़ा पता है? तो जो डीमार्ट का इन्फ्लेटेड मार्केट कैप है राइट नाउ, इट इज इन्फ्लेटेड ओनली, इट इज एट 2.5 लाख करोड़. तो डीमार्ट को इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए 30 इयर्स डाउन द लाइन लाइक 2050 में 75 लाख करोड़ का बनना पड़ेगा. 75 लाख करोड़ इज अ वैल्यू ऑफ top 10 companies of Nifty 50. If you add the market cap of Reliance, TCS, HDFC Bank, ICICI, Axis, DMart and all the 10 companies, then it becomes a 75 lakh. So DMart has to grow that much. Like right now it's trading at 2.5 lakh crore. It has to go to the 75 lakh crore, like probably the 35x right from here, 30 to 35 lakhs from right here. एंड दैट टू हमने यहाँ इमेजिन किया है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट 11%. अगर हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% लेते हैं तो डीमार्ट के मार्केट कैप को बनना पड़ेगा 90 लाख करोड़ का. आई थिंक दैट्स ह्यूज एंड विथ माई लिमिटेड नॉलेज आई थिंक दिस स्टोरी इज नॉट जस्टिफाइड 30 ईयर्स डाउन द लाइन. मतलब ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक गिर जाएगा, बट शायद परफॉर्म ना करे, सबड्यूड रहे. एनालिस्ट कितना चांस देगा? अगर हम 75 लाख करोड़
का डीमार्ट को जो बनना है 28 ईयर्स 30 ईयर्स डाउन द लाइन, उसे चाइना से कंपेयर करें, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ टॉक्स अबाउट द चाइना प्लस वन राइट नाउ. द टॉप 10 मार्केट कैप ऑफ चाइनीज रिटेल कंपनी इज 75 lakh crore right now. But you cannot compare DMart with the Chinese retail, because unlike DMart, which is operating only at retail and little bit now they are changing, the Chinese company have much valuable businesses than DMart. So the story is not comparable right now. Okay. Even चाइना की जो GDP $11,000 पे है. What is important is that Chinese retail companies which are valued at 1 trillion at that time, चाइना की पर कैपिटा GDP $11,000 है, जबकि इंडिया की पर कैपिटा GDP इज नियर $2,000. तो हमें यहाँ से भी और 5.5x जाना है. एंड डीमार्ट की स्टोरी को इंटैक्ट रखने के लिए इंडिया के GDP को भी 6% बढ़ना पड़ेगा. यू आर लुकिंग एट कि एक स्टॉक को अपने डिजायर्ड रिजल्ट को जस्टिफाई करने के लिए कितने सारे फोर्सेस को साथ में जाना पड़ेगा. सो दिस इज हाउ DMart is. This is not a buy or sell recommendation. This is a think recommendation, and only if you are thinking for a 10 years longer horizon. And talking about अब जो DMart है, which is a Walmart's copy, India's Walmart, and Walmart is the only successful business in a retail business in the world. Even if you see at the Walmart pricing and Walmart valuation, it is trading at a market cap of 43,000 crore, which is 1/5 of the DMart. Its PE ratio is 32 only, whereas DMart PE ratio is 180, almost 6x than Walmart. Even at a prime, Walmart wasn't trading this much higher what DMart is trading right now. DMart is one of the most expensive business we have ever seen. ओके, देर आर मेनी पीपल हु मे टॉक कि देखो भाई कि डीमार्ट तो अभी टीयर 2 सिटीज़ में एक्सपांड हो रहा है. येस, आई एग्री टू इट. हो रहा है, होगा. 5 years शायद अपना ग्रोथ को वो इंटैक्ट रख सके, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द 2050 एट दिस वैल्यूएशन. डीमार्ट वैल्यूएशन को आइदर द स्टॉक विल फॉल, बिकॉज एट द एंड योर अर्निंग शुड फॉलो to valuation. If it's not following, okay, it's a free cash flow company. Analyst might give 10 earnings session, 12, 3 साल देगा, लेकिन उसके बाद even if the result is subdued, it has to fall. वो इंटैक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और भी बातें बोली जाती है डीमार्ट के बारे में कि ठीक है यार, डीमार्ट के पास लैंड है, दैट इज़ देयर ओन्ड लैंड, एंड दिस आर वैल्यूड आर ओनली हिस्टोरिकल वैल्यू. तो इफ़ यू टेक द रियल मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, तो वो कितना ज़्यादा वैल्यू होगा. ऑफकोर्स आई अग्री, आई हैव नॉट टेकन दिस इनटू कंसिडरेशन. इवन इसमें ये पॉइंट मैं ऐड कर सकता हूँ कि रियल इस्टेट माइट सी अ ह्यूज टेलविंड राइट नाउ. तो वो होगा, वो हमने कंपैरिजन नहीं लिया है. वी आर टॉकिंग हियर ओनली अबाउट द प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एंड व्हाट काइंड ऑफ मार्केट कैपिटल इट हैज़ टू अचीव टू गेन द राइट वैल्यूएशन विच इज़ नाउ इट इज़ ट्रेडिंग. इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए जो अर्निंग को ही फॉलो करना पड़ेगा. ओके, और भी लोग बोलते हैं कि ठीक है यार, डीमार्ट में तो इफ़ यू हैव टू लिस्ट योर गुड्स इन डीमार्ट यू हैव टू पे प्रीमियम, बट दैट इज़ द निग्लिजिबल मैन. यू 177 के पी को जस्टिफाई करने के लिए ये सब बातें आई डोंट थिंक उतना इम्पोर्टेंस रखती है. तो दिस इज़ व्हाट, नॉट अ बाय, नॉट अ सेल, अ थिंक रिकमेंडेशन. थिंक वो भी फॉर द पीपल हु आर trying to hold it for, like if somebody is thinking ki DMart is my portfolio stock for the next 25 years at 15% CAGR, the Ramesh Damani story, if somebody wanna binge on to that. Okay, so if DMart ये sustain करता है तो 1 lakh invested right now would have become 35 lakhs. But just because I have talked about, अगर हमने ऐसी बात की इसका ये मतलब नहीं कि आप इसे बेच दे. Because somebody might be holding it from the 200 and 2800, somebody might be holding it from 1500, somebody might be holding it from IPO. For them, it's a very good deal. We are talking of the person who is planning to buy right now today at 3,960 or 4,000. Even if they buy or the story becomes relevant, so your investment would have become 35x, probably 40x. 1 lakh would have become the 40 lakhs by the 2050. And you would have said, hadn't I listened to this idiot who was talking on the phone about the DMart, I would have made 40 lakhs. So this is all. So please let me know आपका बाइंग प्राइस क्या है, what is your story, and मैंने अगर कोई पॉइंट मिस आउट किया होगा DMart के बारे में. That's all from my side. This is Ashutosh signing off. Thank you.